Welcome again to the lectures of abstract algebra. So, in the previous video, we discussed rings and some examples of the rings. We have also discussed commutative ring and we have also done a ring with unity. And we have done some examples. We have shown that a ring, so we have shown that set of integers is a ring, set of real numbers is a ring, set of rationals is a ring. Okay, and we have also proved that set of integers under addition modulo n is also a ring. Okay, and we have also shown that we can have a ring without unity, and we also have a ring which is not a commutative, and for the commutative ring we always have to look over the matrices. ओके मैंने आपको एग्जांपल दी थी m2 over z. Okay, it is a ring but not a commutative, but it has a unity. Okay, these are the points which you have to remember and which you have to put in your mind very keenly. Okay, now we will move some more examples on the rings. Okay, देखिए हमने शो किया था R, Q, Z are all rings. In the same way you can easily show that Z cross Z is also a ring. In the same way Q cross Q is also a ring. In the same way R cross R is also a ring. You can also show that Z cross Q is a ring, Q cross R is a ring, R cross C is a ring. These are all rings. Okay, and in all these rings you have the elements like this x y, where x जो होगा ये इसमें से होगा, 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 इसमें से होगा. Okay, you can name it like this. Suppose A, and these sets you can name as B. So x belongs to A, y belongs to B. ओके मैं आपको शॉर्टली दिखाता हूं ताकि आपका वक्त जाया ना हो जाए. इन द सेम वे यू कैन टेक ट्रिपलेट्स. ओके, z cross r, q cross r cross c, these all are rings. Okay, and you can easily prove that these all are the commutative rings. क्यों? बिकॉज आप इसमें से एलिमेंट ले लीजिए x1 y1 और x2 y2, उनको आप ऐसे कीजिए मल्टीप्लाई और उल्टा कीजिए मल्टीप्लाई, the answer will be the same. Okay, so these are all the commutative rings. Okay, and you can easily see that these are the rings with unity. Okay, and if you remember, I told you the unity of a ring is a non-zero element of the ring E not equal to 0, such that A dot E under multiplication, A dot E will give you back A. Okay, so here you can have the unity, or we can say that here is the unity, that's 1 1. This is here E, and which is not equal to 0 0 0. So these are all the rings, and these are all the commutative rings, and these are all the commutative rings with unity. Now we move to another example that we call as ring of Gaussian integers. यहां पर मैं लिखता हूं ताकि आपको सही से दिखे. ring of Gaussian integers. ओके, बहुत ही आसान रिंग है. मैं इसको भी जल्दी जल्दी आपके सामने प्रूव करूंगा, बट आई विल नॉट गिव ए डिटेल्ड प्रूफ. ओके, आई विल जस्ट हिंट यू.
I will just uh, uh, show the show the glimpses of this very ring. Okay, ring of Gaussian integers. देखिए, इसको आप आई से लिखिए, जेड आई, इसको हम आई से लिखते हैं। और जो आई है, इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनकी जो फॉर्म होती है विच इज इक्वल टू दिस, a plus iota b, like complex numbers, a plus iota b. But here is the one thing you have to see, that these a and b, these are integers, just these are integers. So we can say that zi is the subset of complex numbers. उसमें भी होता है a plus iota b, but a or b can be any real number. But here you have subset, you have the particular set, a and b are integers. Okay, now you can easily see that this is also a ring. Kyun? Because c is a ring and this is the subset. So we can see that this also forms a ring. Now if you have to prove all the properties, you can easily prove. अच्छा, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। आप इसमें से यहां पर दो एलिमेंट्स ले लीजिए, x इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड y आप ले लीजिए a2 प्लस आयोटा b2 एंड फॉर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यू कैन टेक थर्ड एलिमेंट a प्लस आयोटा b3. So first property is the closure property, x plus y is also in this very set, because we will get a1 plus a2 वो भी एक इंटीजर होगा, प्लस आयोटा b1 plus b2 वो भी एक इंटीजर होगा, तो इसी में फॉल करेगा. Also you can easily see that x plus y plus z is equal to x plus y plus z, so that is proved associative property. Now here you can have the identity, and you have to show that zi under addition is abelian group. So here 0 will be this equal to identity 0 plus iota 0, because 0 is also an integer, so you also proved this very property. Now you can easily show that you have the inverse of every element. If you take x एलिमेंट ऑफ दिस, इसका माइनस ले लीजिए, माइनस a1 माइनस आयोटा b1, वी विल गेट 0, दैट इज आइडेंटिटी. एंड यू कैन इजीली शो दैट x plus y is equal to y plus x, so it forms abelian group under addition. Now you can easily show that it also forms a semi group under multiplication. X into y is also in this very set, and x into y into z is equal to x into y into z. And you can easily show the distributive laws, right distributive, left distributive, so it is a ring and we call it ring of Gaussian integers. एक और बात है, क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है? मतलब सिंपली x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x, क्या ये है? If you have to show the commutative ring, you have to show first ring, then one more property under the multiplication, a dot b is equal to b dot a. You can easily see that x dot y will always be equal to y dot x. So you can see that this is a commutative ring. क्या ये, now we have to show that क्या ये ring with unity है? क्या इसमें यूनिटी है? बिल्कुल है यूनिटी. अगर आप x को लेंगे, सपोज x लेंगे आप a1 प्लस आयोटा b1, तो आप 1 को ले सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0. सो यू कैन इजीली सी दैट x डॉट 1 will always be equal to x. So here this is e is equal to 1, which is non-zero. Hence this is a commutative ring with unity. I hope you got it. Okay, now let me see. Okay,
सो वन मोर रिंग जस्ट लाइक रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, बट उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, दैट इज, देखिए, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं उसको वहीं पर रखूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए। लेट मी सी कि पहले आपको दिखता है बोर्ड। यस, एक और रिंग है, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, बिल्कुल सेम है, बट ओनली द डिफरेंस इज ऑफ द कोएफिशिएंट्स ए और बी। गॉसियन इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो एन, दैट इज, इसको मैं ऐसे लिखता हूं ZNI, बिल्कुल सेम, वहां पर ZI था अंडर इंटीजर्स, यहां पर मॉड्यूलो एन है ZNI। इसको भी आप लिख सकते हैं A प्लस आयोटा B सच, बट A और B जो है ना, ये इस ZN में से होंगे। ओके, let me take an example to understand you easily. Suppose I will take Z2I. You can easily feel the difference. Z2I, simply मैंने n को लिया 2, मतलब under the modulo 2. Okay, so you can easily see that the form will be A plus iota B. But जो AB कहां से होंगे? AB में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? AB belongs to Zn. तो इसमें Z2 है, तो Z2 में कौन कौन एलिमेंट होता है? 0 एंड 1। तो अब यू कैन इजीली चेक द ऑर्डर ऑफ दिस रिंग, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। देखिए, अगर मैं ए को भी लूंगा 0, बी को भी पुट करूंगा 0 तो 0। अगर मैं ए को पुट करूंगा 1 और बी को करूंगा पुट 0 तो 1। अगर मैं ए को करूंगा पुट 0 और उसको करूंगा 1 पुट तो आयोटा। Now put A equal to 1, B equal to 1, you will get 1 plus iota. So the order of this ring is 0, 1, iota, 1 plus iota, 4. In the same way Z3I, Z3I में कौन कौन एलिमेंट आ जाएगा? Here you have to just like Z3I में Z3, यहां पर आ जाएगा 0, 1 और 2, 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर पुट कीजिए ए भी 0, बी भी 0 तो 0। ए को 1 कीजिए पुट और उसको 0 तो 1। फिर 2 पुट कीजिए, फिर आयोटा आ जाएगा, फिर 2 आयोटा आ जाएगा, फिर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, फिर 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, फिर इन द सेम वे 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा। 3 नहीं आ जाएगा, क्यों? 3 will again be equal to 0 under the modulo, so you have 3 plus 3 plus 3, that's equal to 9। तो इसमें आ गया, इसमें आ गई 4, Z2I, Z3I में 9, मतलब 2 फार्मूला बनती है। इफ यू पे योर अटेंशन, हियर 2 स्क्वायर, हियर 3 स्क्वायर, तो Z4I में कितने आ जाएंगे? 4 स्क्वायर। Z5I में कितने आ जाएंगे? 5 स्क्वायर। सो ऑर्डर ऑफ ZNI, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? n स्क्वायर। So you have the formula. So you got the formula that order of Z2I is equal to 4, that's equal to 2 square. Order of Z3I 9, that's equal to 3 square. In the same way, order of Z5I 5 square, that's equal to 25. So the main formula is order of ZNI equal to n square. ये भी एक रिंग बनाएगा, and that too commutative ring.
एंड दैट टू विद यूनिटी, इसमें भी जो यूनिटी होगी वो होगी 1 + 0 आयोटा, दैट्स इक्वल टू 1। ये भी इसमें होगी यूनिटी एंड इट ऑलवेज इज कम्यूटेटिव, बिकॉज आप यहां पर दो एलिमेंट्स ले लीजिए x और y, वो ऑलवेज होगा x डॉट y विल ऑलवेज बी इक्वल टू y डॉट x। ओके, सो you have these rings. These are the rings which are commutative and with unity. But one point you have to see that if you take n is equal to 1, if you take n is equal to 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जो आपको जहन नशीन रखना है। इफ यू टेक n इक्वल टू 1 तो उसमें क्या आ जाएगा z1i, तो इसमें एक ही एलिमेंट आ जाएगा दैट्स इक्वल टू 0। जीरो रिंग, इट इज ए रिंग, इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग बट हैज नॉट यूनिटी। इट इज ए रिंग विदाउट यूनिटी बिकॉज इसमें नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है एंड यूनिटी मस्ट बी नॉन जीरो, सो दिस इज ए रिंग। और द कम्यूटेटिव रिंग की बात कर सकते हैं without unity, without unity. So you can write down that Zni is commutative ring with unity, मगर कहां पर? For if we take n greater or equal to 2. So you got the ring without unity, but it's commutative. Now you have to find the ring with unity but not commutative. उसके लिए तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैट्रिसेस में बात कीजिए, तो उस पर हम एग्जांपल एक यहां पर करेंगे, फिर हम टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। नाउ our job is to find the ring with unity. It was a ring which is commutative but not unity. Now we have to find the ring with unity but not commutative. तो commutative जब भी आ जाएगा आपको ख्याल में तो बात करना हमेशा मैट्रिसेस की। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे फिर हम बात करेंगे। ओके, इसलिए मैथमेटिक्स जो है ना, इसमें आपका माइंड जो है, माइंड ये आपको पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, याद करने की चीज नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा, सोचना है, फिर आपको खुद ब खुद चीजें मिलती जाएंगी। अगर आपने सोचना बंद किया और इसको रिमेंबर करने की कोशिश की, ठीक है, तो ये याद होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ओके, ये आपको फिर मार देगा। Now if you take a ring, suppose I will take a ring R equal to M2 × 2 over R। सिंपल मैंने एक रिंग ली, या आप Z भी ले सकते हैं। यहां पर मैंने एक सिंपल रिंग ली 2 × 2 मैट्रिसेस ओवर R। तो यू कैन सी दैट मैंने इस पर भी बात की है, दिस इज ए रिंग एंड इट हैज ए यूनिटी। जो इसमें यूनिटी होती है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0। Okay, but if you see that this is not always commutative. Suppose I will take example, let I will take two matrices. If you have to show that it is not a commutative, you have to give a counter example. One example is sufficient to show that the particular thing is wrong. Okay, so I will take in just 1 0 0 0. दिस इज फेमस एग्जाम्पल, मैंने हमेशा यही एग्जाम्पल आपको बता दी है। b इक्वल टू यहां पर 0 1 0 0। नाउ यू कैन सी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेट अस चेक। सो वी विल राइट ए बी। आप देखिए किसके बराबर आ जाएगा ए बी, 1 0 0
0, 0, 1, 0, 0. So we will get 1 into 0. Here 1, that's 0. Now check BA. अब उल्टा आ जाएं. You will easily find that the two results are not same. ये 0 है, ये भी 0 है, ये बात खत्म. So these are not equal. Hence we can say that this is a ring which is not commutative but with unity. You can see not only for 2 cross 2, you can take 3 cross 3, 4 cross 4, n cross n. This is not commutative. But one point you have to remember, if you take n is equal to 1, what will be the result? If you take n equal to 1, simply elements, that is m1 cross 1 over r, that's ये क्या है? This is real set of real numbers. 1 का मतलब क्या है? और इसका जो रो है वो भी एक ही है, वो तो एलिमेंट्स आ जाएंगे. 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1, सारे एलिमेंट्स आर के आ जाएंगे, तो आर ही आ जाएगा. बट विच इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. यहां पर बिल्कुल जहां पर उसमें हमने बात की है Zn में फॉर n इक्वल टू 1, यहां पर भी हमने बात की mn क्रॉस n फॉर n इक्वल टू 1. उसमें भी फेल हुआ था, यहां पर भी फेल हुआ है, which is with unity. So you can see that mn cross n over r for n equal to 1 is a commutative ring with unity. For n greater or equal to 2 is only a ring with unity but not commutative. These were some beautiful examples about rings. कल हम इस पर बात करेंगे what are zero divisors, फिर इंटीग्रल डोमेन, फिर फील्ड. ओके, सो मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज.